Good morning, dear student. Myself, Miss Deepti from Dips Karol Bagh, and in today's lecture, we are going to continue the reading of History, Chapter 14, The Struggle of for Independence, 1919 to 1947. And in today's lecture, we are going to discuss regarding the two or three important incident which make a path for the independence of India, full independence from British rule. So first of all was the Gandhi Inman Pact. This pact was done in was done in the fifth on 5th March 1931. And before that, the Gandhi Inman Pact, the first round of conference was held in London, which was started from 12 November 1932 19 January 1931. And in this first round table conference, discussed the report to submit by the uh, Simon Commission. And we can say this was the if to discuss the what Simon Commission have reported in the to the British government, and what was the Indian politicians views about it. Mainly it was on that. The meeting was held in the London, but the Congress boycotted the session. The British government understood that without the participation of Congress, the decision of on the constitution reform would be difficult. In 1931, Gandhiji and Irving signed a pact according to which the British agreed to release all prisoners who had been arrested without reason, and the Congress also agreed to suspend the civil disobedience movement and agree agreed to participate in the second round of conference. As we have discussed in the Simon Commission, they have provided us provisional independence they have given us, but the Indian government was not having then. Civil disobedience was going on in India, and ultimately British government and India come to know that they can't work without talking to the Indian leaders, or especially the Indian National Congress leaders, and they have made come to an pact was there within the Indian National Congress, especially Mahatma Gandhi and Irwin, the at that time the Governor General of India. So this made a constitutional remedy, constitution formation in India. Afterward, the second round of conference was held in from 7 September 1931 to 1st December 1931 in London, in which Gandhiji attended the second round of table conference, which was held, and in the December in 1931, Gandhiji placed the demand for the grant of dominant status of India to India. Dominant status to India means free India. A free country should be there. India should be free. And the British government agreed to the demand, and Gandhiji had to return to India. Uh, disagreed to the demand, and Gandhiji had to return India disappointed. British does not want, especially the British government does not want to lose its this colony, because it was the main factory, main market for their factories. So how they can lose this such a big and important colony? So they refuse to give the freedom to the Indian, and British Mahatma Gandhi come back India with a big disappointment. He once again announced the civil disobedience movement, and as a result, was arrested at Bombay. On his arrival, many and other leader and innocent people were taken into custody. Priorities to of the people were seized. Properties of the peoples were seized. Newspaper was censored to prevent free expression uh, on the national movement. The third round of conference was held
On November 17, 1932, the Congress boycotted the session, but the British passed the Government of India Act. Three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज देयर. उसमें से सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स बैठे थे और महात्मा गांधी जी उसमें बैठे थे और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में बात की, लेकिन वो फेल हो गई. फर्स्ट वाले में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग नहीं थे और थर्ड वाले में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनकी बात ही करने को मना कर दिया. तो अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाल दिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ये एक कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे लिए, जिसमें हमारे को मतलब प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाने का हमको अधिकार मिल गया था. हमें कुछ लीगल राइट्स भी मिल गए हुए थे जो कि इसमें दिए गए हैं. सो लेट्स सी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. This act was passed by the British Parliament on 2nd August 1935. By this act, India was permitted to become a federation based on the union of provinces of British India and princely state, but choice was given to the princely state to join the federation or not. उन्होंने कहा ठीक है, स्टेट्स गवर्नमेंट स्टेट प्रोविंसेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हम जिनको आप बोलते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट्स बनाओ, बट हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होगा. नंबर 1. नंबर 2, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो इंडिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया. उन्होंने कहा कि आप प्रोविंसेस गवर्नमेंट के साथ में रहना चाहते तो रहो, नहीं तो आप अपने फ्री इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो. इसमें कोई आपको बंदिश नहीं है कि आपको इनका कहना मानना पड़ेगा. Second was that it introduced provisional autonomy, but the governors continued to have their control over the civil services and police. गवर्नमेंट सिविल लोग स्टेट में जो गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस में गवर्नमेंट तो हमारी थी, बट गवर्नर का पूरा अधिकार था, क्योंकि पुलिस और सिविल सर्विसेज यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नर का पूरा अधिकार था. The right to vote was given to the privileged classes only. Again, जो privileged classes थे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स के राजाएं हुए, कुछ गिने चुने लोग हुए जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हुए, उनको दे दिया. ऐसे प्रिविलेज लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, सभी को नहीं दिया गया. Again, the next fourth is the governor and the governor general were appointed by the British Parliament and had veto powers. लो जी, गवर्नर और गवर्नर जनरल को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी और उनके पास में विटो पावर भी होगी. विटो पावर का मतलब है, अगर मान लो उनको कोई कानून पसंद नहीं आता या चाहते हैं कि वो उसको पास नहीं करना चाहते तो विटो लगा देंगे. तो विटो लगाने का मतलब है वो पास नहीं होगा फॉर द टाइम भी, तो वो रुक जाता था. तो गवर्नमेंट ने, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने हमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें आज़ादी तो दी, बट काम करने का अधिकार नहीं था हमारे पास में. The federal part of the act was withheld, but the part related to the provinces come to the force in 1937. Congress opposed this act and decided to contest the elections. The Congress won the election in almost all places with the absolute majority in 6 provinces. It had a majority even in Muslim provinces of Punjab, Bengal and Northwest Frontier provinces. In July 1937, out of 11 provinces, the Congress ministry was formed in 7 provinces. Only Punjab and Bengal had non-Congress government. तो यहाँ पर ये बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात आती है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इनिशियली कांग्रेस ने नहीं माना, बाद में उसके इलेक्शंस करवाए गए तो उसमें से मेजॉरिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई, जिसमें से सिर्फ 11 प्रोविंसेस थे. 11 प्रोविंसेस में से 7 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के की गवर्नमेंट थी, वेयरएज अदर जो 3 थी जहाँ पे बंगाल और पंजाब में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बाकी में सभी में कांग्रेस था. तो यहाँ पे हमें सरकार चलाने का अधिकार मिल गया था.
Differences with Muslim League. Muslim League opposed the Congress because of its own poor show in the elections. Muhammad Ali Jinnah was the president of Muslim League, and he insisted that the Muslim League should be recognized as the representative body of Muslim in India. The League started the two nation theory. According to this, Hindu and Muslims were culturally different, hence they cannot be united, but must be looked at two separate nations. In 1940, a resolution was passed by Muslim League demanded the partition of India with a separate state of Muslims, which was to be the name Pakistan. In spite of opposition, Jinnah marched ahead towards his goal. His demand was accepted by Hindu uh, Mahasabha, which strengthened the Muslim League demand. जी, यहाँ से हमारी हिंदुस्तान की डिवीज़न की बात आती है। मोहम्मद अली जिन्ना को तभी हमारे यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि ही वॉज द पर्सन who is responsible for the division of India into two countries. One is Pakistan and in one India. In this paragraph, we have come to know what was the reason. वो खुद तो इलेक्शंस में जीत नहीं पाए, तो अपने पुअर जो उनके इलेक्शन ना जीतने के कारण वो उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही थी कि भी तुम लोग क्यों नहीं तुम लोग जीत पाए। तो वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। तो हम मुसलमानों के असली वो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो यहाँ पे जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के कल्चरली हम सब अलग हैं, तो यहाँ पे दो स्टेट्स होने चाहिए, एक हिंदुओं का होना चाहिए, एक मुसलमानों का होना चाहिए। जो मुसलमानों का स्टेट होगा उसको हम पाकिस्तान बोलेंगे, ठीक है। और इसको बाद में हिंदू महासभा ने भी इस चीज़ को मान लिया, और जो कि आगे जाकर 1947 में दो स्टेट्स में हम लोग डिवाइड हो गए, दो कंट्रीज में हम लोग डिवाइड हो गए। वन वाज द पाकिस्तान एंड अदर वाज rest of the was India. So this was the story between how the division of India was done by Muslim League. So in today's lecture, that is, in next lecture we are going to continue the chapter. Thank you very much.